So I'll just inshallah go through quickly. हम सूरह हदीद कर रहे हैं, of course, 57, 56 surah of the Quran, 57th surah of the Quran. And this is a Madni surah, or it's one of the musabbihat जो sabbaha yusabbihu से start होती है. It's revealed in the Madni era. It is targeting the Muslims, the believers, and all of those things. The messages to them. It's a reminder, basically. So Allah says, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard." Whatever is in the skies and the earth declares perfection only for Allah. Right? And He is the one Almighty and All-Wise. Lahul mulku samawati wal ard, and He has the kingdom of the skies and the earth. He gives life and He gives death. And He is the one alone who has power over each and every thing. He's the first, He's the last, He's the apparent, He's the unapparent. Right? And He's the one who has over each and everything all the ilm, the ilm. He's all knowing upon each and everything. Okay. Okay. هو الذي خلق السماوات والأرض. He's the one who created the skies and the earth. في ستة أيام. In 6 days. ثم استوى على العرش. And He was always ascendant upon the arsh. Okay. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. He knows whatever penetrates in the earth and whatever exits from it, and excretes from it. وما ينزل من السماء وما يعرج منها. And He knows whatever exits, whatever ascends, descends from the sama, and whatever ascends to it, okay, or in it. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. And He knows, He is wherever you are. He's with you wherever you are. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And He is absolutely all-seer upon each and everything you do. Yeah. Everything you do. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. The dominion of the skies and the earth belongs to Him. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ. And towards Him alone all the affairs and matters return. يُؤْلِجُ لَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْلِجُ نَهَارَ فِي اللَّيْلِ. He merges the night in the day, and He merges the day in the night. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. And He alone, He's aware of, He's all aware of everything in the hearts and the chests. आमिनु बिल्लाह. यहाँ पे एक पैसेज खत्म हो जाता है. This is the introductory passage to Allah, the first passage of the surah. आमिनु बिल्लाहि व रसूलिhi. Believe in Allah and His Rasul. وأنفقوا, and spend. مما جعلكم مستخلفين فيه. With what Allah has made you trustees with. Spend from it. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. And whoever believes from you, وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. And spends, they have the great reward. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. What's with you that you don't believe in Allah? What's the matter with you? وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ. While the Rasul, the messenger, he calls you himself to come so that you believe in your master. What's wrong with you? You don't believe. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ. And He has already taken covenant from you. I mean, Allah has taken the covenant when we were souls. In kuntum mu'minin. If you're truly believers, you know that. Because Allah told you. You know that. यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है. The point of फितरा. फितरा पता है क्या होती है? पता सुना होगा लफ्ज फितरा, राइट? हम कहते हैं कि everyone is born on फितरा. इसका मतलब क्या है? कोई अंदाजा है? कुछ any thoughts share करें? Could be anything that you have in mind. What does it mean? Everyone born on फितरा.
born with Iman in the heart. Born with what? Sorry? Iman in the heart. ईमान in the heart. अच्छा, ठीक है। और भी कोई थॉट्स है? समझ नहीं आया क्या कहा है, सॉरी। द वर्ड फितरा हम यूज करते हैं ना, कि जी जी हर एवरीवन इज बोर्न ऑन फितरा। जी जी। ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन रियली? इन्होंने दैट्स क्या कहा, सॉरी आई कुडंट हियर। आप चीटिंग कर लेंगी ना, आप अपना बताओ। नहीं, उन्होंने जो अच्छा मैंने मेरा अपने जो इन्फ्रेंस है वो ये है कि हाँ, मतलब एक गुडनेस अल्लाह ताला का जो जो क्वालिटीज हैं, वो अमर अल्लाह के उसके लिहाज से मतलब गुडनेस हम्म, परफेक्शन और ये सारी अल्लाह ने एक दी हुई है अच्छाई की हम्म, तरफ, तो वो है। और हम्म, एक के आप किसी की तरफ और एक ये फितरा कि यू यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग के जो इनफिनिट है, ये मुझे लगता है कि इट्स फितरा। ठीक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे फेथ के अंदर ना। फितरा का जो कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी से कि एनीवन इज बोर्न ऑन फितरा, जैसे कि आपने भी बोला है ना अभी, ईमान की जो बात की, बेसिकली आप समझ लें कि व्हेन यू बाय अ स्मार्टफोन, there are few apps which are pre-installed. You don't install them. Calling app, messaging app, whatever, calendar, blah 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 blah. They're already there. That's the fitra of your smartphone. Okay, it's हुँ, already there. But then you install new apps. Some people install very ethical apps. Some people install very unethical apps. Right? Both हर तरह की examples आपको मिलेगी. Then you can make that smartphone work for you in any way, in a good way, in a bad way, whatever that way is. But the fitra of the smartphone is the fundamental smartphone. It didn't come with a specific definition ki how it needs to be used. It just gave you the basics, right? So that's the fitra. So when somebody is born, everyone Muslim belief here hai कि everyone is born on an inherent ability to recognize Allah. Inherent ability to recognize Allah. आप दुनिया का कोई भी एथियस्ट उठा लें, किसी भी इंसान को उठा लें आप दुनिया के, ultimately when he reverts, ask him why did he revert, and he would say okay, there was something missing. समथिंग से। हुँ, There was something missing. That's coming from the fitra. So there is an app installed in us that has two purposes. One, recognize Allah. Two, have iman. Yeah. When I tell, for example, if I tell you, for example, अगर मैं बिलाल भाई आपसे कहूँ कि बिलाल भाई मुझे ये चॉकलेट केक बना दें, ठीक है? वो अलग बात है कि आप बनाएंगे नहीं, लेकिन नहीं, मैं अभी कोई बनाऊंगा मैं तो सारा जुन्नू ही खा जाएगा। चॉकलेट केक खुद ही छोड़ेगा। तो लेकिन जब मैं आपसे ये कहूंगा, तो मेरी एक इनहेरेंट अजम्पशन नहीं होगी कि यू नो हाउ टू मेक अ केक। हुँ, ऐसे ही होगी ना। व्हाई वुड आई टेल यू अदरवाइज? तो व्हेन अल्लाह सेज बिलीव, व्हाट इज द इनहेरेंट अजम्पशन? कि वी हैव द एबिलिटी टू बिलीव, भाई, राइट? वी हैव दैट इन अस। दैट्स द इनहेरेंट एबिलिटी टू बिलीव। व्हेन अल्लाह इज सेइंग मालकुम, जब आप, व्हाई डोंट यू बिलीव इन अल्लाह? Yeah, then we have the ability to believe in Allah, and that's because of the fitra. So Muslim belief ये है कि जब कोई इंसान पैदा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली में पैदा हो, किसी भी faith की driven family में पैदा हो, he's born a Muslim. Why? Because he has the ability to recognize Allah and submit to Allah as default, and then the environment around it changes him. हुँ, That's the point. So what Allah is asking us to do in this ayah, in this surah, is to double click on that app and start to reuse the iman. Basically, tap on it, open it up, because अगर आप अपने फोन को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जो उसकी इनहेरेंट एप्स हैं, दे आर स्टिल देयर, दे स्टिल ऑक्यूपाइंग द स्पेस, दे स्टिल देयर, यू कांट डिलीट देम, राइट? इट्स जस्ट दैट यू डोंट यूज देम. सो अल्लाह इज सेइंग यूज इट. इस इन सूरास का मकसद ये है पूरा. तो ये जो टर्म है ना, इन कुंतुम मुमिनीन, इफ यू आर ट्रूली बिलीवर्स, पहले अल्लाह ने कहा मैंने तो तुमसे कवर्नेंट लिया हुआ है, आप इसको डिनाई करेंगे? कौन सा कवर्नेंट भाई, हमें तो कुछ भी याद नहीं है, हैं? हमें तो कुछ याद नहीं है. हमें तो ये भी नहीं याद व्हेन वी वर इन मदर्स वूम. तुम आप बात कर रहे हैं कि जब व्हेन वी वर सोल्स, एंड द ओनली वे वी नो दैट
is either you have mentioned yourself in the Quran or your Prophet has told us about it. Otherwise, we don't remember. Therefore, in kuntum mu'min, if you're believers, right? Okay. Huwa allazi yunazzilu ala al-abdi, and he's the one who sent down upon his slave ayatin bayyinatin, clear signs or clear ayat, liyukhrijakum min az-zulumati ila nur, so that he could take you out from the darkness into the light. Wa inna Allaha rabbukum lara'ufur rahim, and indeed Allah is absolutely, totally kind and very merciful. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. What's the matter with you? What is it with you that you don't spend in the path of Allah? وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. While the entire inheritance of the skies and the earth belongs to Allah. Do you think He needs it? It's for your own good to spend. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل, and who spent way before the victory and fought for Allah from you is not equal. Is not equal. أولئك أعظم الدرجات. Those have higher, greater ranks. Greater ranks. من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. From those who spend way after and fought. وَقُلَّ, and but to all, to everybody, to all, وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Allah's promise is the excellent one, the best one. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, and Allah is all aware of absolutely everything you do. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Who's that? The one who will give a good loan to Allah. فَيُضَاعِفْهُ لَهُ, so that Allah multiplies it for him. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. He has a great reward, a very noble reward. Whoever gives loan to Allah by spending, of course. يَوْمَ تَرَى, now this is Allah talking directly to Prophet ﷺ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. On that day, you will see the believing men and believing women. يَسْعَى نُورُهُمْ, their light running بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, between their hands, right in front of them. وَبِأَيْمَانِهِمْ, and on the right. وَبُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ, congratulations on that day. Congratulations. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Congratulations on the day for what? For the Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, below which the rivers flow. Khalidina fiha, they will abide in it forever, stay in it forever. Zalika huwal fawzul azim, and that, for the matter of fact, is the great success. हमने फौज की बात की थी कि फौज is a success that you achieve after going through a journey. You reach a destination. फौज के अगर आप बिल्कुल deep dive माना देखें तो it's basically going through a desert which is having no water in it. It's very, very tough to do that. Yeah, so that is the fawz. अब ये पूरी आया आपको बता रही है कि you are actually on a journey. Prophet ﷺ, you will see the believers having lights, two lights in front and on the right, and they're moving. While they're moving, they hear an announcement, congratulations to you. There are Jannat, and they are excited to go there fast. The lights are also flickering. हर किसी की अपनी light है. Okay? And once they ultimately reach there, that's the fawz. They have not entered it yet. Right? So they reach there. That's the fawz, the journey, the tough journey. अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है दूसरे पर्सपेक्टिव पर. यहां तक हमने किया था. This was the believers. Now believers have this light in front and on the right, and they're moving and they've heard the announcement. Okay, there's
There is a Jannah and tajri min tahtiha al-nahr and so on. And after that, this story starts. Ayah 13. Okay. Let's do that, inshallah. So Yawma is the same thing, just like the above. Yeah. आप assume कर सकते हैं, so it's the same thing. So, Special. जी, this is a special mudaf. Okay. And there is a hidden fail. Mhm. Okay. So I think we're quite comfortable with that. So this is on the day. Okay. يقول المنافقون والمنافقات. एक चीज नोट करें, पिछली आयत और इस आयत के दरमियान में यौमा यौमा, ठीक है? The word tara is there, but tara is not here. यहाँ पे अल्लाह ताला explicitly प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं you will see, ठीक है? पर यहाँ पे नहीं कह रहे कि you will see. That tells us the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम will be so distant from hypocrites. He won't even see what's happening to them. It's not important for Allah to tell him that you will see. They're in a separate room altogether. Okay? It's like you go in a fantastic event and there is a celebrity and you really like that celebrity and you want to be as close to that celebrity as possible, and the place you get is a third room with a screen, and probably not even a screen, just the audio sound coming in, and you're listening to him. But there are people who have already paid the premium. They are in the same room with him, sitting next to him. Right? So that's the kind of feeling. चलें, यकूलू आपको पता है क्या है? आई थिंक वी कैन गो फास्ट. अगर आप कहीं स्ट्रक कर रहे हो तो प्लीज बताइएगा. जी, सॉरी, समवन सेइंग समथिंग. नहीं, it's a fail. जी, it's a fail, it's a present tense, Present. and it's हुआ, right? हुआ, yeah. And so we get the 1 and 2 here. ठीक है. ना, यकूलू, यकूलू एक फेल ऐसा था जब मैंने कहा था ये आए तो कुछ होता है इसके बाद. क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? कुछ कहा था. वो कुछ तो मैंने कहा था. कहा था वो मुझे. वो Brackets. Brackets, हाँ. कोट्स Sorry, हाँ. कोट्स कहे थे, ठीक है ना? कोट्स, यकूलू के बाद कोट्स आते हैं, ठीक है? तो नाउ आफ्टर यकूलू एवरीथिंग इज इन कोट्स, ठीक है? यकूलू, सो अल मुनाफिक, बल्कि अभी रुक जाएं कोट्स डालने से पहले, क्योंकि आप नोट ये करेंगे कि दिस फेल इज इन हुआ एंड अल मुनाफिकूना इज सम is an outside doer, right? Yeah. So this is the outside doer and this is also an outside doer. Yeah. दो outside doers है ना? Yeah. तो इसके बाद आप कोट्स लगा सकते हैं. यकूलुल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात. Again, मुनाफिकूना would cover feminine gender, but it's explicitly mentioned separately. Okay, so just like before. Okay, so there is absolutely no confusion. The hypocrites, the hypocrite men and hypocrite women will say on that day, say to whom? Lil lazina amanu. Okay. So this is harf of jar fragment. This is mausul. Okay. And amanu is the fail. Fail. ये कौन सा फेल है? Present. Present होंगे. नहीं, present पक्की बात है. नहीं है. नहीं. सिर्फ कसरा और फतहा का फर्क होता था. सिर्फ कसरा और फतहा का फर्क होता था, याद है? It's a passive fail. नहीं. आमीनू. आमीनू और आमीनू. ये आमीनू जो है वो present. जी. This is the हुआ version. This is the हुआ version. ठीक है? क्योंकि कौन सा फेल है? नहीं होता. Past. Past. It's past. ठीक है? आमनु, like this. It's just a different way of writing. हमजा और अलिफ को अलग भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है. ठीक है? So this is sila. Oops.
ओके, इसमें 1 and 2 आ जाएगा, ठीक है, राइट. सो the hypocrites, the hypocrite men and the hypocrite woman will say, ठीक है, to the ones who believed. हम्म, Oops. ठीक है ना, make sense? हम्म, Yeah. What will they say? अब यहां से आप कोट लगाएंगे, ठीक है, सही. यहां से कोट लगेगी, ठीक है. उनजुरूना, उनजुरूना, पहले तो डिटेक्ट करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे. उनजुरूना क्या चीज है? लेट्स ट्राई टू पॉन्डर अपॉन दैट लिटिल बिट. क्या ख्याल है? उनजुरू और ना. कमांड. उनजुरू और ना कुछ चल रहा है इधर, राइट? तो वो क्या है? Fail with Um, pronoun. as pronoun. Pronoun. Yeah. उनजुरू हमने कहा कि इज अ मैंने ये, फेल. जी, तो मैंने आपको ये, सॉरी इट्स अ सर. फेल, इट्स अ फेल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट. चलें, फेल, फेल, सो 1 and 2 इज हियर, ठीक है. या अब ये कौन सा फेल है? Present. प्रेजेंट की आवाज आई मुझे, ठीक है. और Present, present. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज, जब जब प्रेजेंट टेंस आता है ना नॉर्मली, तो उसकी बिगिनिंग एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए, है ना? ऐसा ही है ना? क्योंकि आपने बिगिनिंग भी देखनी होती है और एंडिंग भी देखनी होती है. लेकिन कई दफा ऐसा प्रेजेंट टेंस आता है जिसकी बिगिनिंग क्लियर नहीं होती. यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है, ये अलिफ, इसके ऊपर छोटा सा स्वाद लगा हुआ है, राइट? ये हमजतुल वस्ली का स्वाद है, ठीक है? इसकी वजह से हरका जो है ना वो नहीं लिखा जाता, वो अज्यूम किया जाता है कि आपको पता है, ठीक है, अज्यूम किया जाता है. तो अब कोई ऐसा प्रेजेंट टेंस फेल कि जो हमजा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हरका क्या होगा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उसको. थर्ड लेटर का देखते हैं ना. अगर दम्मा है तो दम्मा होगा. कसरा या फतह है तो फिर कसरा होगा. हाँ बिल्कुल. और ये किस केस में देखते हैं आप, क्या बनाते हुए? पैसिव कमांड. कमांड. कमांड बनाते हुए देखते हैं. लेकिन ना की वजह से कमांड तो नहीं होगी फहद भाई, क्योंकि ना है. अभी अभी मैं तो आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है. कमांड होगी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आप मिस करिए, मैं बताता हूँ. ओके. तो अभी ये तो हमें क्लियर हो रहा है ना कि ये कमांड पोटेंशियली एक है, क्योंकि अगर अदरवाइज ये अलिफ लगा हुआ है तो इट्स नॉट रियली मैचिंग एग्जैक्टली हाउ नॉर्मली प्रेजेंट टेंसेस आर इन द टेबल. वो या होते हैं, नून होते हैं, ता होते हैं, हमजा होते हैं, राइट? तो उससे मुझे इंडिकेशन मिल जाती है. अब इसके ऊपर मैंने उन जुरू इसलिए पढ़ा क्योंकि मुझे सेकंड लास्ट लेटर पे दम्मा मिल रहा था. मैं इसको इन जुरू भी पढ़ सकता था ना, मैंने उन जुरू पढ़ा. अरबिक ग्रामर के अंदर फेल को 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. हम इसको प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज कमांड इज ड्रिवन थ्रू प्रेजेंट टेंस. बट कुछ ग्रामेरियंस हैं जो इसको एक्सप्लिसिटली कमांड ही कहते हैं. वो डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट, कमांड, फॉरबिडिंग. 4 कैटेगरी. अमर, अमर क्या कहता है? जी, अमर कहते हैं इसको, ठीक है. सो इट्स एब्सोल्युटली राइट टू से इट्स प्रेजेंट टेंस, बट इट्स इवन मोर एक्यूरेट टू से इट्स अ कमांड, ठीक है. अच्छा, अब ये कमांड कैसे है? ये कमांड ऐसे है भाभी कि आपने पहले तो कमांड बनाई. उनजुरू वाज द कमांड एंड देयर वाज अ अलिफ आफ्टर अ वाव, ठीक है. उनजुर का मतलब होता है वेट, टू वेट. वन ऑफ द मीनिंग्स इज वेट, इसके और भी मीनिंग है, टू टू वेट, ठीक है. अब जब आपने उनजुरू कह दिया तो आप बेसिकली कमांड इशू करें, वेट, राइट? लेकिन आपने कहना वेट फॉर अस. तो मैं क्या करूंगा? तो मैं उस कमांड का जो अलिफ है उसको ड्रॉप करके मैं नहनु लगाऊंगा उसके आगे, ओके. नसब वर्जन में.
right? So unzuruna is basically a pronoun attached to a command. सही सही ठीक है? ठीक So मैं this has जी. हम्म So this has 1, 2 and 3. 3 Nahnu is the maf'ul. So now who is saying wait for us? The hypocrite men and the hypocrite women. Now यहाँ से कोट स्टार्ट हो रही है, उनका स्टेटमेंट आ रहा है. Wait for us, wait for us. बात भाई वो एक जो आया थी जब वो जी. ज्यूस जब प्रॉफिट यूज करते थे वर्ड ड्राई ना, तो वो ज्यूस जो थे वो मॉक करते थे, तो फिर वर्ड आया था कि मुस्लिम्स को भी आया था कि प्रॉफिट को बुलाते हुए राय ना मत कहो, उनजुर ना कहो, सी अस। हाँ ये प्रॉफिट को एड्रेस नहीं किया जा रहा. नहीं, मैं कह रही हूँ जी वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है वो वर्ड उनजुर ना, जी सी जी जी अस। तो हम जी जी इसको जी. डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट, लाइक वर्डिंग बिल्कुल वो है और मीनिंग मुझे वो टोटल। देखना पड़ेगा जो आप कह रही हैं. अगर आप मुझे वो भेज दें तो मैं उसको देख के फिर आपको एक ठीक। वॉइस नोट शेयर दूंगा. वैसे नॉर्मली अरबिक में ये होता है कि बहुत सारे अल्फाज जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स बहुत सारी निकलती हैं एक वर्ड की. फॉर एग्जाम्पल यही वर्ड सूरह अबसा में यूज होता है, फल यंजुरुल इंसानु इला ताअम. या तो लुक एट योर फूड. या ठीक है. क्योंकि मैं नजर से याद किया था ना जी कि नजर इज लाइक बिल्कुल. बट यहाँ पे इसका मतलब वेट है, सही राइट? तो हाउ वुड वी डिफरेंशिएट कि कब इसको सी कहना है और कब इसको वेट कहना है? उसके लिए आपको सर्फ करना पड़ेगा. सर्फ में आपको डिक्शनरी लुकअप सीखनी पड़ेगी. क्लासिकल डिक्शनरीज जो हैं उसमें डिफाइन हुआ हुआ है कि किस वर्ड की किस पैटर्न पे क्या मीनिंग्स हो सकती हैं. ये पूरी एक एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है. मैं किसी क्लास में आपको डिक्शनरी खोल के दिखा दूंगा कि कैसे लुकअप करते हैं. मीनिंग लुकअप करने के दो तरीके हैं, एक सिंपल और एक एक्सटेंसिव. जो सिंपल तरीका है दैट विल गिव यू अ क्विक आंसर, but it may not be 100% or extremely accurate. The extensive tariqa, it will ask you to do a lot of effort, but will give you accurate answers. Okay, so the quick answer is just open the app, see what translators have done. That is the closest meaning because they have already done that effort for you. और फिर उन्होंने उसके हिसाब से इसको मीनिंग को दिखा हुआ. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्लासिकल डिक्शनरीज में जाते हैं and you dive into it and there's so many meanings and you see which one is the making more contextual and semantic sense here. That's another way of doing it. इसमें थोड़ी सी इंटेंसिव रिसर्च चाहिए होती है. ठीक है, आप मुझे वो भेजिएगा एलसी इंशाल्लाह if I can understand that. Yeah. So the hypocrite men and the women say to the believers, wait for us, wait. Now इस सीन को याद रखें कि अभी बिलीविंग मैन और वुमेन कैसे आगे बढ़ रहे हैं. उनके पास दो लाइट्स हैं, एक इन द फ्रंट और एक on the right. That's how they are, right? So wait for us, wait for us. Naqtabis. Let's try to find out if you can detect what this is. क्या हो अबस सकता अबस है? अबस हमने पढ़ा था, अबस नहीं, डिफरेंट। no Naqtabis. so this is आपका also a fail it's fail, okay. ठीक है, correct, you're right, it's a fail. What type of fail is this? it's a वैसे it's a नहीं, light fail नहीं, गलती हो गई. लाइट तो नहीं है ये. light test है sorry I mean लाइट टेस्ट है, test लाइट टेस्ट फेल है ये. ठीक है, जी ओके. अब कौन सा वाला तो जवाब अभी भी नहीं आपने लाइट दिया. टेस्ट तो प्रेजेंट ही होगा प्रेजेंट. चल है, ठीक है, इंफरेंस स्मार्ट हो गया आप तो. एक्सक्लूजन के साथ चल रहे हैं एक कमांड चल रही अच्छा है, पर ये इसमें लाइट टेस्ट क्यों है फाद भाई ये मैं कमांड ढूंढने चल की रही है कोशिश ना, कर रही हूँ उनजुरु ये तो कमांड। मैंने आपसे सवाल करना है भाई. अरे वो मैंने थोड़ी अभी वो आपको, मैं मैंने सवाल करना है आई ये एम आपसे ट्राइंग टू लाइट टेस्ट फाइंड के लिए. कोई लाइट वर्ड है नहीं इसके यू आर आगे पीछे स्टीलिंग तो माय थंडर भाभी. मैंने मैं इतना सोच के आता हूँ यहाँ फंसाऊंगा मैं इन लोगों को. वही बता दूं मैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें प्रोनाउन कौन सा है? ना मीन वी
वही नहनु, नाहनु ठीक है। वाला था। सो यू गॉट द 1 and 2, राइट। जी। अब आप वाला सवाल, व्हाई इज इट लाइटेस्ट? क्योंकि फात में पीछे से कमांड चल रही है कमांड। तो उससे क्या ताल्लुक है इसका? ओ ये उम्र। इदाफा। कमांड चली तो इदाफा। ठीक है, चल रही होगी। तो व्हाई अल्लज़ीना का मौसूल सिला बनता जा रहा है था। नहीं, अल्लजीना तो वो आप पिछली गली में छोड़ पीछे आई। सिला का उसका मतलब, तो हाँ सिला, सॉरी, उसका उसका तो तो सिला सिला हो बना गया। दिया था ना। हाँ। अभी वर्ड कोई नजर मुझे आए। व्हाई इट्स लाइटेस्ट, लाइटेस्ट। व्हाई इज इट लाइटेस्ट? यहाँ पे 4 नहीं लिखा था। ये वो तो नहीं है शर्त, जवाबुल शर्त नहीं। मैं आपको हिंट देता हूँ। जब फॉरबिड करते हैं तो उसमें लाइट नहीं 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 लाइटेस्ट कब? नहीं, नहीं, अब आप इनोवेशन टेंजेंट्स पे जा रहे हैं, रुक जाए बोला। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। मैं अगर आपसे कहता हूँ, मैं जुनैद से बात कर रहा हूँ, जुनैद वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ जुनैद कम, आई विल शो यू दिस अमेजिंग थिंग, ठीक है, कम, आई विल शो यू दिस अमेजिंग थिंग। Am I establishing a condition and answer to the condition? शर्त Yeah. जवाबुल Right? जी जी। Coming is condition, showing the thing is answer to the condition, right? So when condition is there, the answer is lightest. ऐसा ही है ना? ओके ओके ओके, सही सही। Wait for us, and then there is an answer. ठीक है? Naqtabis, it's a proper fail. Yaqtabisu, yaqtabisani, yaqtabisuna, and so on. ठीक है? It means to acquire. To acquire something, और स्पेशली ऐसे acquire कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक कैंडल जलाई है और मेरे पास भी एक कैंडल है, एंड आई वांट टू लाइट माय कैंडल, what would I do? I'll just bring my candle close to your candle, touch it on the flame and light it. ऐसे ही होगा ना। तो जब आप अपनी एक चीज को शेयर करते हैं, मैं आपसे इस तरह इस एक्शन से कुछ अक्वायर कर लूं विदाउट यू लूजिंग मच, दैट इज यक्तबिसु, टू अक्वायर समथिंग। वो कह रहे हैं वेट फॉर अस सो वी मे अक्वायर। अक्वायर व्हाट? मिन नूरिकुम। नो कैट, फ्रॉम योर। सॉरी, ये नेबर्स की कैट आ जाती है हमेशा। मिन नूरिकुम, हर्फ ऑफ जर। this is half of jar, this is half of jar, और totally साथ ही वो इदाफा। इदाफा this is idafa, ठीक है, and this would be number 4 for this, जी। ठीक है। So wait karo, so we can acquire some noor. I mean, what does it tell you about the hypocrites? They don't have noor, they have no light, right? and they're looking at the believers to acquire some light from them. Okay? So they are in dark. Okay, that's what they are going to say. Okay? इनको नजर आ रहा है फात पे? अभी तो इनको नजर नहीं आ रहा था, मोमिनीन अलग थे। हैं? पीछे पीछे ही है हम, है ना, दूर तो है बट थोड़ा पीछे। अभी आप देखे तो होने क्या वाला है? अभी तो सीन क्लाइमेक्स पे पहुंचा ही नहीं है। ठीक है? आप देखे तो होने क्या वाला है? मैं पहुंच रहा हूँ, आप किधर से आ रही है। You guys have to wait for us, पता है ना। अभी तो सीन बताता हूँ मैं आपको होने क्या। ठीक है, तो wait for us so we can acquire some of your light, right? From your light, give us something. qila एक मिनट। अब कीला जो है ना, कीला इज समथिंग वी डिड वंस। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल आपको हर चीज याद होगी इस पे, लेकिन लेट मी ट्राई। डू यू रिमेम्बर व्हाट कीला इज? नहीं याद? नहीं सब लाइट फ्यूज होगी। नहीं। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज बेसिकली अ फेल, ठीक है, दिस इज पास्ट। द एक्टिव फॉर्म ऑफ कीला इज काला, ठीक है, काला। Kala is active. Now this one is passive. जब काला को आपने पैसिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि शुरू में ऊ साउंड होती है और बीच में ई साउंड होती है, पास्ट टेंस को पैसिव बनाते हुए।
right? So if you try to make kala passive, you would say ku, and जो काला का अलिफ होता है, basically that is representing a root letter वाव. So इसका second root letter वाव होता है. Wow. Kuwila, that would be in principle the actual uh, passive. But Arabs don't like it. Especially जब ये vowel letter के ऊपर इस तरह की ऊ और ई sound है ना, ऊ ई sound Arabs don't like too much. So what they do is they say, okay, fine. Because it's a kasra, let's change this weak letter to a letter that sounds like a kasra. Okay? So they make it koila. Now the problem is, oo sound still doesn't go with the ya on kaf. They say, okay, fine, let's change that haraka to the sound that matches the ya. Koila. That's how they come up with this. Okay? This is a passive form of kala. If kala means he said, what would kila mean? It was They said. Something was said. something was said to It them. was said. It was It said was to. said. Mhm. Do you want me to write the entire process here for you? आप Mhm. चाहते हैं कि लिख दूं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ just in case. So Kala became Kuvila. Kuvila became Qila. Kuila, and Kuila became Qila. That's how the story went. ठीक है? Okay. कुछ थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं. So this unzurna became a condition, right? And naqtabis min nurikum is the answer to the condition. All of that is answer to the condition. यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा is the answer to the condition. Okay, wait for us. Okay. We may acquire from your light, your nur. Okay. Qila, it is said. Why it is said and not it was said? क्या ख्याल है? When is this event happening? The day of judgment. Has the day of judgment arrived? Future. No. This is future. Mhm. So why Mhm. use the past tense? Because it's certain that it will Because happen. it's certain. Yeah. Because it's certain. Absolutely. It's bound to happen. ठीक है? About. तो अब आप देख रहे हैं ना कि literal translation doesn't work with Arabic. There's so much wisdom and hikmah behind the language. ठीक है? It is said. So what is said जब वो कहते हैं कि जी I give us some noor as well. Irji'u. Irji'u. Let's Command. find out. Hum जरूर किधर है? Mhm. जी sorry. Command. 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 बिल्कुल. This is a command. Very good. Has 1 and 2 in it. The 2 is whom. Sorry, not whom. क्या होगा 2? Whom? अंतम. Oh, Command sorry. में तो whom नहीं Command होता में ना. sorry whom नहीं हो सकता जी. Sorry. Command में whom नहीं होता. Mhm. ठीक है. तो ठीक है. It's command. इर्जिउ का मतलब याद है. हमने किया हुआ पहले ये. Return. Return. Come Return. back. Return. बिल्कुल. Return. So go back. It will be said to them. Now यहाँ पे कीला आ गया. बेसिकली अब आप कोट्स को क्लोज करें, पहले इसको समझें कि यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू. The ones who the hypocrite men and hypocrite women will say to those who believed,
quotation mark open, wait for us, so we acquire some noor from you, quotation mark closed. So that's one statement done. So it is said, quotation mark open again. Okay, this is another tila. Okay? Return, go back, go back, go back. Oh, go back. Come on, go back. Wara'akum. What is wara'akum? Wara is special back mudaf. Special Special mudaf. बिल्कुल. क्या मतलब था वरा का? back behind. behind yeah Wara. Okay. बिल्कुल बिल्कुल. Behind. So go back. Behind you. Behind. Behind you. Okay. Go back behind you. Or from the jumla failure context, can I mark it 3? जी. ठीक है ना? मफूल चल रहा है. ठीक है. ठीक है. फल तमिसु. फल तमिसु. Basically, let's see if you can decode this little bit. फिर मैं आपको बताता हूँ. फल तमिसु का क्या समझ आता है आपको? कितने वर्ड्स हैं ये? फल command तो वो है ना, Fall वो जो हर्फ जाज़मा नास समथिंग. ये राइट क्यों क्या कर रहा है उसको, तामिसु को? फा तो आतफ है. ठीक है. नहीं, वो नहीं है, फल नहीं है, फाद है ये. वैसे फा और अल आप तमिसु देखें, बताएं मुझे क्या ज़हन में आ रहा है. fa अगर मैं तो आपने इसको फल और तामिसु अलहदा फेल के लिहाज से देख रही थी. फल जो लाइट फल जो होता है वो फा और लाम होता है. सॉरी, इकट्ठा. ठीक दिस इज ठीक फा है. एंड अलिफ, राइट. और इसमें वही अलिफ लगा हुआ है जिसपे सौद है छोटा सा. अच्छा, So सही. this is फाद hiding the haraka. So that ठीक is a good indicator कि ये command हो सकती है, ठीक. right? So there is an ataf and there is a command. So अगर इस command से मुझे original fail बनाना हो, हुआ version, तुम तुम it's the हुआ version is basically तुम iltamisu, yaltamisu. These are two versions. Iltamisa, yaltamisu. क्योंकि हुआ वर्जन में आप बिगिनिंग नहीं देखते हैं, उसमें पास्ट टेंस में सिर्फ एंडिंग देखते हैं, right? इल्तमिसा यल्तमिसु. तो यल्तमिसु ट्रांसफॉर्म्स इनटू तल्तमिसु. ठीक है. तल्तमिसु ट्रांसफॉर्म्स इनटू तल्तमिसूना. Taltamisuna loses its noon and gets the alif, so it becomes taltamisu. Then you remove the ta, and you're left with inability to pronounce it. So you give it a helper alif, and then you look at the second last haraka, which is mim. Okay? Mim has a kasra, so you'll say il tamisu. Come out. Did I lose you or not? ठीक है. See? एक दफा Il दोबारा. tamisu. नहीं, Il tamisu. सॉरी. ठीक. जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. यहाँ पे बता देता हूँ. I think that would be easier. Okay, so the fail was yal tamisu. This is the fail. Yal tamisu. The Hua version would be Yaltamisuna. Okay? The Antum version would be Taltamisuna. Okay? Then you make it lightest. When you make it lightest, you lose the noon and you put the alif. Okay? Then you lose the ta. ठीक. Now you cannot read it. But to give it a helper alif. Now you look at the meme, which has a kasra, and you put a kasra. Iltamisu. Iltamisu. This word means to seek. To seek. और सीख भी ऐसा ही सीख नहीं, ये बड़ा स्पेशल सीख है. ठीक है. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कमरे में हैं और आप पाकिस्तान में हैं और आप लाइट चली गई, रात का वक्त है. ठीक है. पिच डार्क हो गया एंड यू वर अबाउट टू गो आउट टू हैव सम डिनर.
with family. Okay? And you just went to that room to take the car keys. अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा. And you don't know कि कार कीज किस साइड पे होंगी. How would you look for it? यूं करेंगे ना आप. जगह आप अंदाजे से जाएंगे उस जगह पे जहां पे कीज थी और आप हाथ लगा लगा के देखेंगे चीजों को. You're desperately seeking something. That is iltamisu. Desperately seeking something. Okay. So it will be said to them, go back behind you. Faltamisu. And seek. Seek what? Nuran. Seek the light. Seek the light. It is not mentioned who is going to say that. It's qila, it's passive. We don't know who's the doer. Okay? But it will be said to them. Wallahu alam, who says this? Angels say this, more believers say this. We don't know. Okay? So it will be said to them. Go back, seek the nur. So this is going to be the 3, and this is going to be 1 and 2. 1 and 2. Okay? Now fa यहाँ पे जो लगा हुआ है इसका मतलब so होना चाहिए कि then होना चाहिए कि as a result of होना चाहिए. Go back behind you. Complete the sentence. Go back behind you. Then or Then seek the nur. Seek that nur. Seek light. Go back. Okay? अब जो होने वाला ना सीन, जब तक आप यहां तक पढ़ते हैं ना, you are already quite, if you really understand what the scenario is being sketched, and it's Allah talking to us, you are already quite scared. क्योंकि हम सब लोग जो है ना इस कैटेगरी को फॉलो कर सकते हैं. सो ऑलरेडी क्वाइट स्केयर. उसके बाद एक सीन क्रिएट होता है. फदुरिबा, दरबा यदरिबु इज अ फेल. जिसका मतलब होता है टू हिट. बेसिकली स्टैंडर्ड मीनिंग इसकी होती है हिट, पर इसकी कुछ और मीनिंग्स भी होती हैं. ठीक है. इसकी मीनिंग होती है टू समथिंग व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अबव. ऊपर से जब नीचे गिरती है चीज ठक करके आगे. And this is the fi'l. It of course has an ataf, and this is a fi'l. But let's try to understand what type of fi'l is this. Passive. Past. Passive. Past passive or present passive? Past. Past. Present. Passive. Very good. This past, it was daraba, became duriba. Okay, duriba. So this particular fi'l means that there is going to be a wall or something like that falls from above. Okay. ठीक है. So इसको आप डिफरेंट तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. आप कह सकते हैं then आपको ट्रांसलेशन मिलेगा put in place or will be established or put. इसको इंग्लिश में बताना कि ऊपर से नीचे गिर रही है कोई चीज is difficult. So then will be put. It will be put. अभी मैं इसको it will be put लिख देता हूँ क्योंकि he will be put won't make sense. ठीक है. There's a हुआ in it. बैनहुम. बैनहुम का पता होगा. Special mudaf, right? And it's idafa. Bainahum is between them. Between whom? Between whom? Yeah. Munafiqeen and mu'minat. Munafiqeen and the believers. Munafiqeen and the believers. Yeah. Right? So then it will be put between them bisurin. This is harf of jar. Okay? Harf of jar. Sur is the same word from which the word surah comes.
Suratul Asr, Suratul Naziyat, and so on. Surah. Sur ka word jo hai, that is basically is fundamentally is used for representing something that is very high and protective in terms of walls. जो पुराने कासल्स होते थे रोमन्स के टाइम्स के, उनके कासल्स की वॉल्स बहुत हाई बनाई जाती थी और उन वॉल्स के दरमियान में एक पूरा सिटी आबाद होता था। उस सिटी का एक कल्चर होता था, एक नॉर्म होती थी, ट्रेडिशंस होते थे। आप किसी और कासल में चले जाएंगे, उसका अपना कल्चर होगा, अपने नॉर्म होंगे। एंड दोज वॉल्स दैट वर सराउंडिंग वॉल्स वर बेसिकली द सूर, राइट? So from that same word comes the surah, because every surah has its own culture, own theme, own tradition. So that's where the word surah comes from. So this is a wall. Between them, there will be a wall that will be thrown to them. Okay, so then it will be put between them a wall. मैं यहाँ पे बी को ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। वो ये है कि कुछ फेल्स ऐसे होते हैं, they always come with a preposition. For example, इंग्लिश का फेल है to come. Okay? I always come time. Would it make sense? No. I need something else. I always come on time. On time. Right? क्या हो गया? मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं कह सुने मेरी बात, वल्लाही कोई नियत नहीं थी, ठीक है? मैंने जेन्युइनली एग्जांपल बताई है। कोई मेरे जहन में ऐसी टेंशन नहीं थी, जो आप लोग समझ चुके हैं। देखिए अल्लाह ताला गैब से मदद करता है, आपको पता है ना। क्या बात हो गई, बस कमाल ही हो गया। I always come on time. So this word come needs a preposition on, right? It works with it. It's like a pair. It comes with it. इसी तरह अरबी में भी कुछ prepositions होती हैं जो fails के साथ attached होती हैं. This be is one of those. So when they are attached, you don't normally translate it. ठीक है? तो यहां तक जो सिचुएशन बनी है, रिवाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। On that day, the hypocrite men and the hypocrite women will say to the ones who believe, wait for us, so we may acquire some nur from you, or your nur from your nur. It will be said, go back behind you and then seek the nur. Seek nur there. Somebody will push them back. Okay? For Duriba, and then it will be put between them a wall. Now they are separated. The believers and the hypocrites are separated. स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी स्केच हो रहा है सीन और, ठीक है? लहू बाबुन बातिनुन बातिनु। अब यहाँ पे आप देखें, इसको पहले मैं लेबल कर देता हूँ। दिस वाज 1 and 2, दिस वाज 3, दिस इज 4। लहू बाबुन बातिनुन। Let's look at it holistically. क्या समझ आता है? Is it, what type of structure is this? Lahu is harf of jar. हर्फ ऑफ जार है, बिल्कुल है, हर्फ ऑफ जार। And ba तो ये हो जाएगा C. This is C, okay. And babun is ism rafa. Mhm, So it can be, it's a common, mhm. is मुब्तदा भी हो सकता है। मुब्तदा भी हो सकता है और खबर भी मुब्तदा। बातिनु बातिनुहु, तो बातिनु is इदाफा। बात है नहीं। इदाफा। Who is a ये pronoun? हो जाएगा हु। Who is a pronoun? This is B. Okay, good. Is it a normal or abnormal structure? Abnormal. B is abnormal. CAB. oh sorry C. CAB is abnormal. Hmm. Kind of. पर इसमें लेकिन वो ये नहीं है common कोई है तो कॉमन common है तो common नहीं
डिलेड मुब्तदा इज कॉमन, ठीक है ना, जी मुब्तदा कॉमन है, तो वी वोंट कंसीडर इट एबनॉर्मल. सही इज इट अ पोजेशन स्ट्रक्चर? याद होगा रिसेंटली पढ़ा है लहू सही पोजेशन जी स्ट्रक्चर. जब हर्फ ऑफ जर जी जी लाम के साथ हम्म मुतालिक बिल खबर आता है और फिर आगे मुब्तदा आता है, तो दैट कैन बी अ पोजेशन स्ट्रक्चर. हम्म ठीक है. सो द वन दैट इज अटैच्ड टू द लाम इज अ ओनर हम्म and the mubtada is the one possessed, owned. Okay, so lahu babun, meaning he इट है has a door or it has a इट door. है सही ठीक है, it has a door. So who has a door? वॉल Wall. Wall. अब आप इसको इस तरह देखें, हमने पढ़ा था जब Pharaoh was alive, we learned rusulun min Makkah. हम्म, Remember, हमने कहा ये min Makkah is kind of a characteristic of Rusul, इज ओके right? ओके याद है? सही जी अब जी आप देखें सूरिन लहू बाबुन, वो the wall, it has a door, ये स्पेसिफाइड तो कुछ right? अच्छी This is description. This is description of that, Description. Description. right? Description है. बी बातिनुहु, बातिन क्या होता है? हिडन हिडन Hidden. ठीक है, it's hidden. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सीन फिनिश नहीं हुआ अभी. ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होती है. थैंक अस्सलाम वालेकुम. Assalamu हाफिज़. alaikum.